Okay, so it's started recording. Okay, thank you. So we'll be starting this 10th chapter. Krishna, Krishna, Krishna. It's not getting shared. Okay, it's been shared. You are able to see my screen, Prabhu? Yes, Prabhuji, we can see Okay, videos. okay, okay. We can see the Veda based fully. Oh, yes, perfect. So this is the last shloka of 9th chapter where Krishna says, Man mana bhava mad bhakto madhya jivam namaskuru mam yuvashyasi yuktavyam atmanam mat parayana. So Krishna in this shloka, he says about that you have to remember me, you have to become my devotee, you have to worship me, you have to pay obeisances to me. So 4 things Krishna is telling us to do. So by which we can become Matparaha devotee, a pure devotee of the Lord. So how to do it? So that is what this chapter deals. That how by seeing the opulences of the Lord, and we can remember Krishna everywhere. So Krishna's opulence, Krishna's power, and Krishna's beauty is manifested through his opulences in this world. So when we see those opulences in this world, we can remember Krishna's presence. So that is what is the theme of this chapter when we come to Vibhuti Yoga. Okay, just a minute. So I will be reading from my notes, and that will be I will displaying to all of you. Okay. So let's me go. Okay, so we'll start with this chapter. You are able to see now my notes? Yes, Prabhuji. Okay, so we'll be covering today verse number 1 to 7, which is the theme which where Krishna says, knowing that Krishna is unknowable and source of all. So that is the theme, that we have to know that Krishna is unknowable and he is the source of all. So that is the theme of first 7 chapters which we are going to start. Okay. Shri Bhagavan Vacha Bhuya eva mahabaho shunu me paramam vachaha yatteham priyamanaya vakshami hitakamaya. Okay, some devotee can read the translation. The Supreme The Personality of Supreme Godhead said, Personality of Godhead said, Listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend, for your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained. So knowledge giving better than what I've explained. So Vishwanath Chakravarti Thakur says on this that he is going to explain what he has already told in chapter 9, 7, 8, 9, and some more explanation of it will be in this chapter. Now let us come to this verse. So very interesting verse and one of my favorite verses to begin with. Shri Bhagavana Vacha, the Supreme Personality of God is saying, Bhuya Eva. So Bhuya Eva means again I am going to tell. So in Bhagavad Gita, many times Krishna ends some conversation and then again he says, again I'm going to tell. So again he is telling Bhuya Eva, what I am going to tell again. So you see in 18th chapter also when Krishna is going to speak about, he speaks to Krishna, Arjuna that Yatha Shashi Tatha Kuru, that whatever you desire you can do it now. And immediately after this, Krishna says, Sarva Dharman Pratyaja, Mam Ekam Sharanam Vraja, Aham Tvam Sarva Papebhyo, Mokshishasmi, Ma Sucha. Like this. Immediately after that, he says. So, why he says that? Because sometimes when you love a person, you gave a choice to him, but you don't want him to choose wrongly. So, immediately Krishna says, I will make a choice for you. So, कभी कभी हमारे कैंप्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चों को बताते हैं कि ये स्फूर्ति कैंप है, इसमें ये होना है, ये होना है, ये होना है। एंड बच्चा बोलता है सर मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, किसी को पता है क्या करते हैं हम? क्या करते हैं वापस कैंप्स में अगर वो आ नहीं रहा होता है? बेटा विचार से आपको आना चाहिए।
मेरे विचार से आपको आना चाहिए। हाँ हाँ, हम उसको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। सुनो, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुमको फिर से बताता हूँ इस कैम्प में क्या क्या होने वाला है। सब भूया एव अगेन। Krishna is telling again, I am going to tell you, Arjuna, what I have already told. So in one way, you see, chapter 9 is over. That is, half of Bhagavad Gita is over. Half of Bhagavad Gita is over. And this is 10 chapters. So Krishna is telling again, I will tell. Don't worry. Eh. So Vishwanath Chakravarti Thakur says that Krishna might think that I have given a lot of technical knowledge also in the first 9 chapter. So maybe Arjuna is not so competent to understand it. So let me tell him again in a simpler language. So therefore he is again telling Bhuya Eva. Again I am going to tell you. Don't worry. I will explain you in a simpler language. So Bhuya Eva. Again I am going to tell you. And then he says that Krishna never becomes hopeless with us. He never becomes hopeless. कि यार इसको समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आप किसी डिवोटी को सेवा देते हो, भैया ये प्रभु ये बॉटल को ना यहाँ से यहाँ रख के रहना। और जब आप उनको ऐसा सेवा देते हो तो देखते हो नहीं हुआ, तो आप बोलते प्रभु आपको बोला था ना इस बॉटल को यहाँ से यहाँ रख देना। हाँ प्रभु भूल गया। प्रभु आपको बोला था ना इसको रखने के लिए। हाँ प्रभु सॉरी सॉरी। अरे तुमको कितना समझाऊं, समझ में नहीं आता क्या तुमको? सो जनरली हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड कि भैया ये सुन क्यों नहीं रहा, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। एंड कृष्णा इज अगेन टेलिंग, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड कृष्णा इज नॉट बिकमिंग होपलेस। So from millions of lifetime, Krishna is doing follow-up. अब सुनेगा भूया एव भूया एव भूया एव। मैंने हर हर जन्म में इसको मैं बता रहा हूँ, प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी, बट ही इज नॉट कमिंग। सो अगेन कृष्णा सेज भूया एव, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दिस मैसेज। Then he says Mahabaho. So Vishwanath Chakravarti Thakur says, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says in this, that why Krishna is telling Mahabaho, he is already powerful. Everyone knows that Arjuna is powerful. He is telling, you are powerful in terms of your body, now become powerful in terms of your intelligence also. So be focused, be attentive. Now you should be very, very attentive. Oh Mahabaho, what I am going to tell you again, please be attentive. Then Shunume, please hear. So the process of self-realization which Krishna has given to us is here. In 7th chapter beginning also, Krishna talks about hearing. That just hear. Here also Krishna is telling just hear. So by hearing is the method of realizing Krishna, not by seeing. So when we hear more about Krishna, then we realize Krishna. Then what Krishna is going to tell? Paramam Vachaha. I am going to tell you about my opulences, about myself. So that is Paramam Vachan, what he is going to tell. The supreme knowledge I am going to tell about myself. Because knowledge about me is not revealed even in the Vedas. Vedas I have very confidentially told about myself. But I am going to tell about myself, my inner heart to you. That also I am going to tell you. What the Supreme Lord thinks, that I am going to tell you. Paramam Vacha. Yatte aham priyamana. Yatte aham, I am going to tell you. Priyamana. Why? Because you are very dear to me. So Srila Baldev Vidya Bhushan says, Priyamana means you are filled with love for me. Therefore, I am going to tell you. So why he says this interesting thing that you are filled with love for me. Therefore, I am telling you. Because when I will tell you about myself, you will not envious of me. So very simple example Aisha Prabhu sometimes gives, that suppose there is a mother, and in front of that mother, somebody comes and begins to glorify her child. So she becomes very happy. But on the other hand, if somebody comes and glorify the neighbor's son, then what happens to mother? She is not happy. Why she is not happy? She is not filled with so much love for the neighbor's son as for you. She is filled with love for you. So when she hears this glorification about you, she becomes very happy. Priyamana. So you'll be able to appreciate this inconceivable nature because you are filled with love for me. Vakshami hit kamaya. And why I am telling this? Vakshyami, I am going to tell you hit kamaya, for your benefit. I am going to tell all these things about myself, not for my own glorification.
कि मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, नो, फॉर योर बेनिफिट. So Krishna's match is fixed. Krishna's match is fixed. So Krishna, whatever he speaks, whatever he does, is only for the benefit of his devotees. ये उनका इंटरनल हार्ट है, हित कामया. सो भले ही कृष्णा बोले समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽसि न प्रिया, आई एम कॉमन टू ऑल, आई डू नॉट डिस्क्रिमिनेट. ये जनरल रूल है कृष्णा का. बट what is in the heart of the Krishna is हित कामया, मैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ. कभी कभी हमने कॉलेज में देखा है, प्रोफेसर बताता है देखो ये चैप्टर आने वाले हैं एग्जाम में, ये चैप्टर्स आने वाले हैं एग्जाम में, लेकिन फिर जब पूरी क्लास चली जाती है तो वो एक स्पेशल स्टूडेंट को बुलाता है, देखो मैं ना इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ये वाले जरूर प्रिपेयर करें. क्यों? ताकि उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिले, उसको ज्यादा नंबर मिले, क्योंकि वो उसका डियर है, हित कामया, उनका हित चाहते हैं. So Krishna similarly he is telling over here the first verse that I am going to tell you again very confidential knowledge about myself. Because you are very dear to me, because you love me, you will not understand me, you will not be envious of me, and I am telling all this just for your benefit. Okay, you are qualified with prema. Lord is inclined to benefit his devotees. So therefore, I should think this is for my practical application, that this knowledge is for my benefit. This knowledge will benefit me. Therefore, I should be very attentive. So Krishna through Arjuna is telling us that we have to be very attentive by hearing this message. So why he is telling about this Aishwarya Gyan? He is talking about the Aishwarya Gyan over here. Because when we know that Lord is a competent master, then we'll take it from the heart that he is worthy of my worship. So that is why Krishna is telling about his opulences. Aishwarya Gyan over here. Okay. So another meaning which Srila Baldev Vidyabhushan gives to Paramam Vacha is that I am going to tell you some secrets about myself which will astonish you, which will make you wonder, wow, Krishna, you are this also? So Srila Baldev Vidyabhushan says about that Paramam Vacha also means that Krishna is going to speak about something which will astonish us. Okay, so this is Srila Prabhupada purport, very amazing purport of Srila Prabhupada. So in the beginning, Krishna Prabhupada talks about that Shri Bhagavan Vacha. What is the meaning of Bhagavan? He says, Aishwarasya Samagrasya Vireshya Yashashya Gyana Vairagyam Bhaga Iti Gana. So the six opulences are strength, fame, wealth, knowledge, beauty, and renunciation. Therefore, he is known as Bhagavan. So one interesting point regarding opulences of Krishna is that generally if we have even a minute opulences with us, so we tend to show it to ourselves. We tend to show it for ourselves. But when Krishna has its opulence, Krishna has his opulence, Krishna does not take these opulences for his glorification. He uses these opulences for hit kamaya, for benefiting his devotees. That is the difference between his having opulences and our taking opulences. He uses all his opulences for one purpose, that is hit kamaya. That is what is his job profile. That whatever I have, it is for benefiting my devotees. Like for example, strength. Can you give example where Krishna uses his strength for hit kamaya, for his devotees' benefit? His strength he is using. Any Govardhan example? Leela. Govardhan Leela, correct. Govardhan Leela. He Prabhuji uses killing his, in all the demons. killing all the demons, correct. He uses his strength for hit kamaya, for his devotees. Okay, knowledge, where he uses knowledge for hit kamaya. Bhagavad Gita. This Bhagavad Bhagavad Gita Gita. itself, Prabhuji. Bhagavad Gita itself. Arjuna was in depression, and so uses his knowledge for hit kamaya, for Arjuna's benefit. Wealth, uses his wealth for his devotee. Opulence of wealth for his devotees. Sudama. Sudama. Correct, Sudama. So he gives all the wealth to Sudama. Even the queens of Dwarika, 16,108 palaces. For each one of his devotees, they were devotees of Krishna. For each of them, he constructed 16,108 palaces. Correct. Renunciation for hit kamaya. Guruji, Arjuna. चैरियट ड्राइवर ऑफ अर्जुना. वृंदावन को छोड़ के जब चले गए, वृंदावन को छोड़ के गए,
इतना रिनंसिएशन नहीं, ज्यादा हो गया रिनंसिएशन। when Prabhuji, when Yudhishthir Maharaj अगर पूजा के लिए बुलाया तो भगवान ने वो एक्सेप्ट किया, वो लोटस फीट सबके ऋषिज को तुमने कहा। Correct. सबको he washed the lotus feet of all the sages. Correct. He renounced his position as Bhagwan and became a Parsarthi. So Krishna uses his opulences for Hitkamaya. Then Prabhupada is writing, what is the aim of this chapter? Why Krishna is telling how this chapter is to establish devotion in firm conviction. That is what is this chapter all about. To establish the devotion in firm conviction. And that we are convinced that Krishna is worthy of my master. And this last paragraph is very, very important. Very, very important. What Krishna is speaking. Okay, Umang Guru, you can read this last paragraph. The more one hears. Yes, The more Prabhuji. one hears about the Supreme God, the more one becomes fixed in devotional service. One should always hear about the Lord in the association of devotees that will enhance one's devotional service. Discourses in the society of devotees can take place only among those who are really anxious to be in Krishna consciousness. Others cannot take part in such discourses. The Lord clearly tells Arjuna that because Arjuna is very dear to him, for his benefit, such discourses are taking place. So this is the art of hearing. So one has to hear, because if he hears, he becomes more fixed up in devotional service. But how he has to hear? He has to hear in the association of devotees. And what is the quality of that association? They are eager to be in Krishna conscious. Then one gets the maximum benefit. If you are in the association of devotees who are really anxious to be in Krishna conscious, and then in that association, if we do hearing, then our conviction and our devotion will increase. And therefore, Krishna is having this discourse for the benefit of Arjuna. And therefore, this courses Bhakti Shastri we have. For whose benefit? For our benefit. So I wrote there Bhakti Shastri. That Arjuna is very dear to him for his benefit. Such discourses are taking place. So therefore, this is also a course, Bhakti Shastri course. So whose benefit? For our benefit, we are doing it. Okay, this is the art of hearing. So this was purport. So Baldev Vidyabhushan and all, they talks about this. So he's telling, please have attention what I'm going to speak. Astonishment. This is all I spoke to all of you. Lord Aishwarya is the cause of bhakti. Is one of the cause of bhakti is that we are very surprised by the Lord's opulence. We are touched by the Lord's opulence. So he's telling, be alert for your thing. Okay. So then now Arjuna may have this question. Now we are going to second verse. Arjuna may have this question. Knowing about you, Krishna, Paramam Vacha, you are telling about yourself. But I know there are demigods. I have been to demigod planet. They know about you. And even the sages, they know about you. So I can get knowledge from them also. Why you are telling it me on the battlefield? Krishna says, no, they cannot know me. So therefore now Krishna is going to tell this. Na me vidhu suragana prabhavam na maharshaya aham adirhi devana maharshinam cha sarvasha. Yes. Read translation, some devotee. Neither the hosts of demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of the demigods and sages. So Krishna is telling, nobody knows my mysterious origin and opulences. Even not the demigods and the sages. Demigods or sages भी मेरे बारे में नहीं जानते हैं. So let us come to the verse. नामे विधु, मुझे नहीं जानते. शूरगना, जितने भी demigods हैं वो मेरे को नहीं जानते. प्रभावम. So prabhavam, there are two definitions given by one definition is given by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, and one definition is given by Srila Baldev Vidyabhushan. So Prabhupada has included both. Amazing Prabhupada. So Prabhupada, it says origin. Vishwanath Chakravarti Thakur says Krishna is talking about his birth. And Baldev Vidyabhushan talks about that he is talking about his opulences. That nobody knows about his birth. That is by Baldev Vidyabhushan. Nobody knows about my opulences. That is by Baldev Vidyabhushan. Both are correct. Nobody knows about Krishna. Name vidu suregane prabhavam na maharshaya.
Even the great sages, they are not able to know about me. Aham Adirhi Devana. Why they are not able to know me? Because I am the beginning of these devatas. And Maharshi Namcha, and all the sages. Sarvasa, whatever you have in this world, I am the origin of it. So the thing which has come after me, how can they know about me fully? Like we cannot know about the birth and the other details of our parents fully. It's not possible. Until unless our father tells us about that. Little bit he will tell about. He will not tell about his whole life. We don't know about the whole life of our father. So Krishna is telling, I am the origin. How can they know about me fully? So, and Prabhupada quotes this verse of Brahma Samhita 5.34. Even if Muni travels at speed of mind, one cannot understand the tip of the toe of the Lord. So how difficult is to understand the Lord? Krishna is telling, no, they cannot know about me. Okay, so we'll go to the purport. So we'll read the underlined words. So Brahma Samhita, this is what Prabhupada is quoting, that it's very difficult to understand Lord. Even the demigods and the great sages cannot understand Krishna. They can understand neither his name nor his personality. So what is the position of so-called scholars of this teeny planet? Prabhupada tiny ko teeny bol dete. So what to call the scholars of this teeny planet? No one can understand why this Supreme Lord comes to this earth as an ordinary human being and executes such wonderful, uncommon activities. So this is the puzzle for the public. कि सुप्रीम लॉर्ड जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ जगत को छोड़कर हैं जहां पर वैकुंठ कोई कुंठा नहीं है इस कुंठ के जगत में क्यों आ रहे हैं सो दिस इज वेरी बिविल्डरिंग व्हाई इज प्रभावम व्हाई इज कमिंग ओवर हियर so this they cannot understand it is not understand because you see demigods भी जब किसी को श्राप देते हैं स्वर्ग में तो क्या बोलते हैं जा तू मृत्यु लोक में जन्म लेगा मतलब कितना श्राप की कैटेगरी में आता है हम लोग सोचते हैं हमारा बर्थ बहुत अच्छा है प्रभु जी हम जन्मे हैं तो बहुत लेकिन जब लोग श्राप देते हैं तो क्या बोलते हैं जा तू मृत्यु लोक में जन्म लेगा एंड दैट्स हाउ वी सी महाभारत में सबका कनेक्शन कहाँ कहाँ से हो रहा है सो डेमिगॉड्स टॉयलेट करने के लिए भी पृथ्वी पे नहीं आते हैं पता है आपको कलयुग में डेमिगॉड्स टॉयलेट करने के लिए भी यहाँ नहीं आते सो यहां पर आ रहे हैं सुप्रीम लॉर्ड ओ भाई क्यों आ रहे हैं सो वन शुड नो देन दैट स्कॉलरशिप इज नॉट द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कृष्णा सो बाय स्कॉलरशिप वन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड सो प्रपात क्या है सीक्रेट रिवील कर देते हैं अपने पर्पट्स में जो कृष्णा आगे बोलने वाले हैं उसको प्रपात पहले ही बोल देते हैं Here the Lord indirectly says that if anyone wants to know the absolute truth, here I am present as the Supreme Personality of Godhead. I am the Supreme. One should know this. Although one cannot understand the inconceivable Lord who is personally present, he nonetheless exists. So how can we understand him? We can actually understand Krishna who is eternal, full of bliss and knowledge, simply by studying his words in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So we can understand the Lord by the mercy of his devotee. So Bhagavad Gita is a mercy of Krishna and then mercy of Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam is a mercy of Shukdev Goswami and Parikshit Maharaj. That is the whole thing which Baldev Vidyabhushan says. Baldev Vidyabhushan says when Krishna is telling you cannot understand me by the demigods or Maharshi, he says by scholarship and by your own endeavors you cannot understand Krishna. The only way you can understand is by the mercy of devotees. The personality of Godhead cannot be conceived unless one is in the transcendental position. So how you can come to this transcendental position? When you get the mercy of some devotees. Prasad Alesha. So this comes in 10.14.29. That when one gets the mercy of the Lord, then only one can understand. So why Krishna come to this world? Prabhupada is revealing the secret. Why he comes. So earlier he asked the question, why he comes? Now Prabhupada is giving the answer, why he comes. Because most men cannot understand Krishna in actual situation, out of his causeless mercy, he descends to show favor to such speculators. So the coming of the Lord to this world is causeless.
There is no cause. आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने बहुत तपस्या किया इसलिए भगवान आ रहे हैं, इसलिए वो कर रहा है इसलिए भगवान है, नहीं, it is his causeless mercy, by which Krishna comes. Okay, now let us go to Vishwanath Chakravarti Thakur's purport. Very amazing. So he says, my appearance can be known only by unprecedented mercy and by no other means. Well, the Devtas may not know. This is Arjuna speaking. Because they are absorbed in material pleasure. But the sages must know. No, they also don't know. Na Maharshaya. Why? Because I am the cause of all of them. So they will not be able to know me. And Srila Baldev Vidyabhushan says a very important thing. The Lord speaks in order to show that this knowledge is difficult to understand without the mercy of his devotee. And without the mercy of his devotees, Arjuna and Srila Prabhupada, it's very, very difficult to understand about Krishna. Paramam Vacha, about Krishna's birth, his appearance and his opulences. It's very, very difficult to understand. So Krishna says, I am the origin of everything. So in this is Ishupnishad 4th verse, Netat Deva Apunavam Purvam Arshad. Vishwanath Baldev Vidyabhushan quotes this. He quotes Rig Veda and he quotes Ishupnishad to show that Krishna was the first and then came the demigods. He cannot attain by the Devas. He has existed before them. He cannot be attained by Devas because he has existed before them. Okay. 10.3. So I will take question answer in the end. Last 10 minutes I will give for question answer. Now this is a very, very interesting shloka. So abhi switch change ho raha hai. Okay. Yo mamajam anadim cha vittiloka maheshwaram asammudha samrityeshu sarva pape pramuchyate. Okay. So yes, some devotee can read the translation. He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, he only, undeluded among men, is freed from all sins. Very interesting shloka. Yes. Yo mam ajam anadim cha. One who knows that I am unborn, ajam, anadim, I am without any beginning. Cha has a great meaning. We'll discuss about it later. Vitti loka maheshwaram. Vitti means to know. Loka maheshwaram, that I am the proprietor of all. Asammudha samrityeshu. He is not bewildered. In this world, he is not bewildered. And what will happen? Sarva pape pramuchyate. He will be freed from all sins. So one who knows Krishna is freed from all sins. That is what is the essence of this shloka. Now, in previous shloka, Krishna says nobody can know him, not even demigods and the sages, because they have come after Krishna. And here Krishna is telling one who knows me is freed from all sins. तो भैया ये बीच का गैप कहाँ गया? You cannot know me. One who knows me is freed from sin. So what is the middle part? Anyone can guess. What is the middle part? Here Krishna is telling you cannot know me. Here Krishna is the one who knows me is freed from sin. What is the middle part? जन्म कर्म समय दिव्यम वाला है शायद। नहीं क्योंकि भगवान ने खुद By the mercy बताया। of Lord, जब भगवान की कृपा होगी तो उससे हम समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। और कुछ? To the middle part One is who tries like to know devotees. Okay, Krishna is the one devotee. Yes, Rishabh Prabhu, please tell. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बलदेव विद्याभूषण ने इसके ऊपर काफी चीजें बोली हैं। यस, तो बीच में क्या हुआ? यस, अद्वैत निताय प्रभु, बीच में क्या हुआ? ओके, ठीक है, उमंग प्रभु, प्लीज टेल। To the beach is like when person is sincerely working for that Krishna's mercy to attract. That's the beach wala part. So Krishna only reveals that much which is helpful for him or her to progress in spiritual life, just to keep his faith going to it. Okay, good. Yes, Pawan Prabhu. Prabhuji, it might happen that Krishna is telling that although people cannot understand me, but one who knows me, he will be free of sin. That means indirectly Krishna wants to say that you will know me by my mercy.
Okay. So almost correct. All of you are almost correct. So here a very important thing which Srila Baldev Vidya Bhushan says that in the gap is a devotee. In the gap of both the shlokas is a devotee. He is a pure devotee of the Lord. So when he comes to your life, when he comes in your life, then he reveals bhakti to you. So by the bhakti of a pure devotee, he attracts Krishna's mercy, and by the causeless mercy of that devotee, our bhakti in our heart gets nourished, and that's how we become free from sin. So we'll read the translation of Baldev Vidya Bhushan and Vishwanath Chakravarti Thakur. So there they reveals this. Okay. So let's move inside. Oh, sorry. Today they also have their purpose or they only have translations today? Purports are also there. Baldev Vidya Bhushan purport, Yes, okay. yes. I'm telling you from reading that only because otherwise it will take a lot of time. Okay, so this is once again, can you explain? Okay, so this is Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's translation of this verse. So before that, before going to translation, one more thing I would like to tell where otherwise you will read and then you will get confused. The word cha, which is used over here, the cha, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Baldev Vidya Bhushan says this cha word is very, very important. Because here Krishna indicates that I am unborn and I am without beginning. So Arjuna may say that everyone knows Supreme Lord is unborn. So why he is writing cha? So Krishna is telling cha because one who knows that I am unborn, but I also take birth, he is unbewildered. अब मैं इसको और थोड़ा explain करता हूँ. Okay. So first we'll go to this part, first part, which I was explaining. So this is Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's translation. He who, without bewilderment, knows that I am unborn, since I have no beginning, also I am born, knows that I am the Lord of all planets, is freed from all sins in this world, and performs bhakti without impediments. So see how this cycle works. When you know Krishna, you are free from sin, and because you are free from sin, then Krishna says a verse, Esham tvantagatam papam jananam punya karmanam te dvanda moha vinirbhukta bhajante mam drinavata. Then you can perform your bhakti without impediments. Then your bhakti will increase. So when you know Krishna, by your bhakti, by knowing Krishna, you get free from sin, and by freeing from sin, you can do your bhakti properly. Now the twist comes over here again. Knowing Krishna is very difficult. So there you require the help of a devotee. So a devotee's bhakti makes the causeless mercy of Krishna descends into your life, by which you come to know about Krishna. When you come to know about Krishna, then the sins get removed. When sins get removed, then your bhakti does not have impediments. So the beginning begins with the bhakti of a pure devotee. Then you come to know about Krishna, then you get free from sin, and then your own bhakti gets nourished. Clear this cycle? This cycle gets clear? Any doubt in the cycle? Krishna now completes the shloka. This is linear, not cycle. This is linear, correct. This is linear. This is linear. Correct. This is linear. So devotees' mercy attracts Krishna's mercy. Then you come to know about Krishna from the pure devotees. Then you get free from sin. Then your own bhakti does not have any impediments. So that's how Krishna says, if you know about me, you will be free from sin. Now let's come to the second trick of this shloka. The word cha, the cha which is used. Okay. He who knows that I am unborn and also born and still without beginning. So this is Baldev Vidya Bhushan. This is Baldev Vidya Bhushan. Lord of all planets, with no bewilderment, is freed from all sins. So what do you mean by that he is unborn and he is also born? And still without beginning. He is unbewildered. Okay. So very interesting thing which, so I will just explain because the purport will take a lot of time. So Vishwanath Chakravarti Thakur says
that these two are absolute statements. Krishna is unborn and Krishna takes birth. He is a son of Mother Devaki. He is a son of Yashoda. He is a son of Nanda Maharaj. He is a son of Vasudeva. These are absolute statements. Two absolute statements. He is born and he is unborn. So how? Because when Krishna takes birth, he maintains his stature of unborn. He comes in his same spiritual body. So both the statements are correct. Somebody is taking birth and he is unborn. That is Krishna. That is what is Achintya Shakti of the Lord. So we'll just see this part of Baldev Vidya Bhushan commentary, where he explained these things. See, he who knows that I am unborn and also born to Vasudeva, I am still without beginning, is freed from all sins. Cha here signifies that he is also born. By using the word Ma, Krishna indicates his particular birth from Vasudeva. I take birth, but because I am Paramatma, I am eternally without birth. Both these conditions are absolute truth, a demonstration of his Achintya Shakti. A demonstration of his Achintya Shakti, that Krishna is unborn. So Srila Baldev Vidya Bhushan, Srila Prabhupada in his purport explained this in more detail. He explained this in more detail in the sense that when we take birth, we have to take a material body. And the material body has a birth and a death. So although the soul is also Aja, there's a difference between both Aja. Like in 2.20, the characteristics of souls are defined as Ajo Nityam Shashvato Yam Purano. He is also Aja. But the difference between both the Ajas is when the soul comes to this world, he has to take a birth and death, which is with the body. He has to change his body. But Krishna maintains his stature as unborn. He is not, does not have to take a material body. His body is fully spiritual. Therefore, both these are absolute statement that he takes birth and is without birth. So one of the examples which in my childhood, so he gives example. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, to explain this point, he gives example. In my childhood, during Damodar Leela, it is inconceivable that I could be bound by strings of bells, but not by the cords of Mother Yashoda. तो भगवान के कमर में एक बेल लगा हुआ था, बेल क्या बोलते हैं उसको, कमर बंद बोलते हैं, मतलब कुछ बेल्स टाइप का लगा हुआ था. बोले उससे बंधे हुए थे, लेकिन माता यशोदा की रस्सी से नहीं बंध रहे थे. इनकंसीवेबल. Similar, in the same way, my birth and my non-birth are also inconceivable. तो इसको जो जानता है वो असमूढ़ा है. सो एक और एग्जाम्पल हमारे आचार्य देते हैं, वो है कृष्णा एज अ बाल ब्रह्मचारी. तो आई थिंक आप लोगों ने ये पास टाइम सुना होगा. सुना है आप लोगों ने ये पास टाइम, कृष्णा एज बाल ब्रह्मचारी. सो गोपियां होती हैं, उनको दुर्वासा ऋषि होते हैं, दुर्वासा ऋषि होते हैं ना शायद, उनको वर्शिप करने जाना रहता है. तो कृष्णा को बोलते कैसे जाए, यमुना जी हैं. बोले यमुना जी को बोलो कि कृष्णा बाल ब्रह्मचारी है. कृष्णा बाल ब्रह्मचारी दिन भर तो हमारे साथ रहता है. तो बोले बोलो. तो उन्होंने बोला कृष्णा अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमको जगह दे दीजिए. और यमुना माता जी जगह दे देती हैं. बोले क्या बात कर रहे हो. फिर वो चले जाते हैं, फिर दुर्वासा मुनि का वर्शिप करते हैं और उनको सब कुछ खिलाते हैं, समोसा, रबड़ी, गुलाब जामुन, संदेश, सब कुछ खिला देते हैं. और फिर पूरा पूजा करके आते हैं. बोलते दुर्वासा मुनि हमको वापस भी जाना है, कुछ बताइए. तो बोले जाइए यमुना जी को बोलिए कि दुर्वासा मुनि ने अगर अपने पूरी लाइफ में सिर्फ दुर्वासा ग्रास खाई है, दुर्वा ग्रास खाई है, तो आपको जगह दे दे. अभी तो खाया, गुलाब जामुन, रबड़ी, पेड़ा सब खाया अभी. बोले नहीं नहीं, जाके बोलिए, जाके बोलिए. तो गोपियां जाती यमुना देवी को बोलती हैं कि अगर दुर्वासा मुनि ने पूरी जिंदगी भर ध्रुवा ग्रास ही खाई है तो हमें जगा दीजिए. तो जैसे ये बोलते हैं यमुना नदी अलग हो जाती है. और फिर गोपी बोलती है क्या चल रहा है ये. कृष्णा बाल ब्रह्मचारी और ये दुर्वासा मुनि कभी ध्रुवा ग्रास के अलावा कुछ खाए नहीं, मेरे सामने खिलाया हमने. तो फिर वो कृष्णा से बोलती है कृष्णा तो परपट चाहिए, इसका परपट, हम बिविल्डर्ड हो गए. तो हमको बिविल्डर्ड से तो आप बाहर निकालिए. सो कृष्णा बोले कि व्हेन आई स्पेंड टाइम विथ यू इट इज नॉट फॉर माई एंजॉयमेंट, आई एम आत्मा राम. So I don't require you for my enjoyment. I be with you so to give pleasure to you. It's not for my enjoyment. So therefore I am always a brahmachari.
And Durvasa Muni, in his whole life, he has ate only dhruva grass. So now whatever he eats, the taste comes to him as a grass. Even if you give him gulab jamun, the taste which comes to him is of dhruva grass. Therefore, whatever he eats, he is eating dhruva grass only. So this is inconceivable. Krishna is Val Brahmachari. Okay, so now let us go to Prabhupada's purpose, because Prabhupada is also revealing some many secrets. I think हम इसी श्लोक तक आज कर पाएंगे. आज मैं 7 श्लोक का था, पर ठीक है, ये important श्लोक्स थे. Okay. Again, one more inconceivable thing example which Vishwanath Chakravarti Thakur is giving. That Krishna is telling, yes, bro. Krishna is telling he is Loka Maheshwaram, that he is the controller of all planets. But I am also the chariot driver of Arjuna. So I becoming a chariot driver of Arjuna is not minimizing my position as the Loka Maheshwaram. So one should not be bewildered by this. अरे ये तो पार्थ साध्य ड्राइवर बन गया, कुछ नहीं कर सकता. हाँ, पूरा महाभारत का युद्ध जीता है इसने. The Lord then speak of his powers, which are hard to understand. He who knows that though I am a chariot driver, I am also the great controller of all the planets. He alone is not bewildered about men and is free from all sins, which are obstacle to bhakti. Okay, so in just we'll now just read Prabhupada purport, very special purport of Prabhupada. So Prabhupada first is telling about that devotees are not ordinary men, because they are able to understand Krishna. They are Manushyanam Sahasreshu. They are not ordinary men. They are superior to millions and millions of ordinary men. See what Prabhupada is writing for all of you. Great devotees. Vancha kalpadruvascha kripa sindhu bhayavcha patitanam pavnebhyo vaishnavyo namo namah. And you are superior to millions and millions of ordinary men. One who can come to understanding that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the proprietor of everything, the unborn, is the most successful spiritually realized person. See Prabhupada का definition, कौन है spiritually realized? जो कृष्णा को जानता है कि he is my Lord, he is self-realized. So we can see devotees around us, they are very special. They are not ordinary men. So Prabhupada is telling, so this is from Baldev Vidya Bhushan. See, Prabhupada takes most of the purport from Baldev Vidya Bhushan. And then sometimes he adds Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. So this is the commentary of Baldev Vidya Bhushan, that it's the devotees in our life who will make us get Krishna. On our own, we cannot get Krishna. It's devotees. So therefore, Prabhupada is writing over devotees are very special. And then Prabhupada compares that Krishna is also Aja, we are also Aja, but we are changing bodies. But Krishna is not changing bodies. And Lok Maheshwara. So he is different from his creation. Prabhupada is writing, because he is the creator, like I am the creator of this bottle. So I am different from this bottle. So Krishna is the creator of this universe. Therefore, he is different from his creation. If Krishna is known as son of Devaki, then how can be he unborn? This is from Vishwanath Chakravarti Thakur. If Krishna is known as son of Devaki, then how can he be unborn? This is from Vishwanath Chakravarti Thakur. Cha, the word cha, which Vishwanath Chakravarti Thakur explains. That who is unbewildered? बोलेंगे अरे तो हमारी तरह ही जन्म लेता है, हमारी तरह खाता है. नहीं. Therefore, Duryodhana was confused. All demons were confused. He is like a normal person. He is Devaki Nandan. No, he still maintains his position as unborn. So Prabhupada explains that although he appeared, he was not an ordinary person. So now this is a golden purport which I am going to read now. This is a golden purport of Srila Prabhupada. Last paragraph of purport. This is specialty of Prabhupada. This is not spoken by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. This is not spoken by Baldev Vidya Bhushan. This is by Prabhupada. So his realization, his ecstasies. Okay. So who is not bewildered? Prabhupada is giving practical for us. What we have to do so that we are not bewildered. Asam Mudha. So Prabhupada is explaining this purport for that world of Asam Mudha. For that he is explaining this purport. Anything done under the direction of Krishna is transcendental. So this is how Prabhupada is beginning his purport. Anything done under Krishna is transcendental. It cannot be contaminated by the material reaction, which may be auspicious or inauspicious. So in this world, we have something called auspicious. We say, हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है. लेकिन Krishna consciousness इन दोनों से परे है. It is transcendental. And it has to be done under the direction of Krishna.
then it is asamudha. The conception that there are things auspicious and inauspicious in the material world is more or less a mental concoction, because there is nothing auspicious in this world. क्या बात है, प्रभात ने धो डाला material world. एक लाइन में प्रभात ने धो डाला. There is nothing auspicious in the material world. तो मैं ये परपट पढ़ रहा था जब मैं साउथ इंडिया यात्रा में था, तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था उससे. तब ये जब लाइन मैंने पढ़ा, देयर इज नथिंग ऑस्पिशियस इन द वर्ल्ड, जो मैं कुछ भी देखता, बिलबोर्ड, ट्रेन, बस नथिंग इज ऑस्पिशियस, नथिंग इज ऑस्पिशियस. पूरा विजन ही चेंज कर देते हैं प्रभात. सो व्हाट वी थिंक, द कंसेप्शन दैट देयर थिंग्स ऑस्पिशियस, ये अच्छा है ये बुरा है, इस मटेरियल वर्ल्ड में इज मोर और लेस अ मेंटल कंकक्शन. देयर इज नथिंग ऑस्पिशियस इन दिस वर्ल्ड. Everything is inauspicious because the very material nature is inauspicious. हर चीज inauspicious है because the material nature is inauspicious. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे. So Shankaracharya also says it's not auspicious. We simply imagine it to be auspicious. प्रभु जी लाइफ में कैसे कैसे चल रहा है आपका लाइफ? प्रभु जी सब अच्छा चल रहा है. अरे कैसे अच्छा चलेगा भाई, मटेरियल वर्ल्ड में है तुम. नॉट ऑस्पिशियस. हम ये बोल सकते हैं वी आर स्ट्रगलिंग टू बी कृष्णा कॉन्शियस. या एंड नाउ कृष्णा Prabhupada is coming to practical what we have to do. From this verse what we have to learn. Real auspiciousness depends on the activities in Krishna consciousness in full devotion and service. ये है real auspiciousness. हमें नहीं पता क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है. हमको कुछ लेना देना नहीं है इस दुनिया के अच्छे बुरे चीजों से. हमको सिर्फ एक चीजों से लेना देना है, कृष्णा क्या चाहते हैं हमसे. दैट्स इट. वो अच्छी है बुरी है उसका हमको फिक्र नहीं है. व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, वी आर नॉट कंसर्न्ड इन दिस वर्ल्ड. सो वी डोंट कंपेयर व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. वी जस्ट कंपेयर व्हाट कृष्णा वांट्स अस टू डू. दैट्स इट. Therefore, if we at all want our activities to be auspicious, see कैसे auspicious बनेगा, then we should work under the direction of the Supreme Lord. Such directions are given in authoritative scriptures such as Bhagavad Gita, such as Bhagavatam and Bhagavad Gita, or from the bona fide spiritual master. ये तरीका है अपने लाइफ को auspicious बनाने का. हमको mental concoction से अपनी लाइफ auspicious नहीं बनेगी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम भक्त के जीवन में कब आती है? जब ये सोचता है कि मुझे पता है कि मेरा एडवांसमेंट कैसे होगा. ये भक्त के लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत है. He thinks that he knows how he can advance in Krishna conscious. He knows how he can plan to become Krishna conscious. And he make independent plans on his own. I know how to advance. But here, what Prabhupada is telling, your work will become auspicious if we do it under the direction. I don't know how to advance. Even Rupa Goswami, Sanatana Goswami, the greatest scholars of this world, they are going to Chaitanya Mahaprabhu and telling, we don't know how to advance. You tell us how to, what to do. Okay. Because the spiritual master is the representative of Supreme Lord. All action done under such directions are free from reactions of pious and impious activities of this material world. The transcendental attitude, see, the transcendental attitude of the devotee in the performance of activities is actually that of renunciation, and this is called sannyas. क्या है वो transcendental attitude? क्या होना चाहिए attitude? कि मैं pious impious है क्या मुझे नहीं पता. All things I will do under the direction of my superior. My every step in life should be under the direction of my superior. My superior should know what I am doing at every step. Then that is auspicious. This attitude of a devotee is called transcendental attitude. And this performance of activity is called sannyas. Sannyas does not mean you take a saffron cloth and you have shaven head and all. No. Sannyas means this attitude that whatever I do is under the direction of scriptures, is under the direction of my spiritual master, is under the direction of my superiors. That is what is transcendental attitude of a devotee. So Prabhupada ends this chapter in this way. Okay, so thank you so much. We covered till verse number 3. I was supposed to do till 4, till 7. So next I will cover there. So thank you so much. Any doubts, any questions till now, whatever we heard? So I will just revise in little bit, one line I will revise.
So Krishna speaks in the first verse that I am going to tell you a very secret, because again I am going to tell you because you are my dear friend. So please hear it attentively. I am going to tell you for your benefit. So Arjuna may question that I may hear it from Devtas and Rishis. He said, no, they cannot know about me because they have come after me. I am their origin. So, and then Krishna says that if you know about me, then you will be free from sin and you are not bewildered. So, how to know about him? Is through his devotee's mercy. Then we'll get free from him and there will be no problem in the execution of our devotional service. And Prabhupada's end this chapter end this his purport uh, by telling about what is auspicious and what is inauspicious and how we can make our life auspicious by following the direction of scriptures and by following the direction of spiritual master and our superiors. Thank you. Yes. So those devotees who wish to leave, they can leave. It's 8 o'clock. Those devotees who wants to ask questions, they can ask questions. Okay. So yes, Pushpendru. Hare Krishna, Prabhuji. Hmm. Prabhuji, in third sloka, it is mentioned that he only, undeluded among men, is freed from all sins. So, Prabhuji, is this knowledge is for men only? Men here applies to human beings. Whenever Krishna talks about Purusha and all, so it talks about human beings. Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Okay, one question came in chat box. I can take that first and then I will take this. What is the this bewildered about which Krishna is talking? Krishna is talking about bewildered that to assume him as a normal person. That shloka comes, na? Avajananti ma mudha manushim tanimashita. So that is what is the bewilderment. That he's also is taking birth. He's like us only, he's taking birth. No, he's unborn. He's a source of all. So that is what is he's talking about bewilderment. Clear, Akash? Okay. Yes, Ashish. Hare Krishna, Prabhuji. Am I audible? Yes, perfectly. Yes. Thank you, Prabhuji. Prabhuji, एक general doubt ये था, like why the knowledge about Krishna is so confidential? ऐसा माइंड में आता है कि जैसा कि आपने मेंशन किया पहले भी कि like scriptures में भी वेदास में भी क्या जो लॉर्ड के बारे में ना डायरेक्टली नहीं बताया गया है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, कृष्णा ओनली टेल्स। तो माइंड में ये भी डाउट आता है कि अगर सारे स्क्रिप्चर्स में कृष्णा के बारे में एक्सक्लूसिवली अगर ग्लोरिफिकेशन होगा, देन पीपल वुड टेक दैट वेरी सीरियसली और बहुत ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। देन व्हाई इज दैट द नॉलेज अबाउट कृष्णा इज सो कॉन्फिडेंशियल? Very good question. Thank you. So, first thing, Raisham gives one example to this. जैसे आपके घर में आपके हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में कुछ बात होती है, लेकिन वो बाहर जाके वो सब बात नहीं करते। बाहर जाके उनका ऑफिशियल जो है स्टेटस है वो दिखता है, जैसे ये जॉब कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी वाइफ है वो मार्केट प्लेस पे जाके हस्बैंड से कुछ पर्सनल बात नहीं करती। उस समय कुछ मैनेजमेंट बात हो गई या कुछ उस टाइप से बात होती है। सो व्हेन इट कम्स टू फैमिली लाइफ, मतलब कृष्णा की पर्सनल लाइफ है, तो वो कृष्णा की पर्सनल लाइफ है, श्याम सुंदर फॉर्म, लॉर्ड का वृंदावन रूप, और ऑल दिस थिंग्स इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग। सो कृष्णा डज नॉट वांट टू रिवील दोस थिंग्स कि वो सबको पता चले, अदरवाइज दे विल टेक इट चीपली। जब हम कृष्णा के पर्सनल लाइफ को उनकी ग्रेटनेस के बिना जानते हैं, तब वो हमको लगता है कि वो तो नॉर्मल कर रहे हैं। जैसे गोलोक वृंदावन में कृष्णा क्या कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं। अब बताओ ये हैं गैया दो रहे हैं। अब ये अगर आप लॉर्ड का ग्रेटनेस नहीं जानते हैं, तो फिर क्या होगा, आप उसको बोलोगे यार ये तो हम मेरा बच्चा भी चोरी करता है। वो भी कृष्ण है क्या? माखन तो मेरा बच्चा भी चुराता है, दूध तो हम भी दो लेते हैं, और ये तो लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, डांडिया चालू हो जाता है उससे। So therefore Vedas reveals more of a greatness of the Lord. They don't go into the confidential life of the Lord. जैसे बाइबल है, वो लॉर्ड की ग्रेटनेस को बताते हैं, आवर फादर इन हेवन दिस दैट वे। वैसे ही वेदास भी वो लॉर्ड के बताते हैं, उसको आप छू नहीं सकते, इतना दूर है, वो पकड़ नहीं सकता, आपके माइंड के कंट्रोल के बाहर है। So it talks about those aspects of the Lord, greatness of the Lord's a lot, so that at least वो humble रहे, हाँ भगवान है, भगवान है, भगवान है। और लॉर्ड का जो कॉन्फिडेंशियल रीजन है वो कुछ ही भक्तों को पता चलता है जो कि एनवी नहीं करते। सो दैट्स हाउ कृष्णा डज नॉट रिवील। दिस इज द वन रीजन which
I heard from one of my superior. Second reason which I heard is in first canto of Srimad Bhagavatam, when Vedvyas was writing scriptures, he was scolded by Narad Muni that you have not explicitly told about the Lord in your Vedas. Correct? So he also raised that question. So at that time, Vedvyas also gave an explanation why he did not write. He told the people are not qualified to understand about the Lord. They need an indirect way to reach God. So current people, those who are going to come in Kali Yuga, they wanted more material benefit. So मैं तो वेदव्यास क्या समझाते हैं नारद मुनि को, क्यों उन्होंने इनडायरेक्ट किया है, महाभारत के बारे में बात कर रहे थे कि मैं उनको बताऊंगा कि तुम सूर्यदेव के पास जाओ, तुमको अच्छा पति मिलेगा। तो वो सूर्यदेव के पास जाएंगे, सूर्यदेव प्लीज हमको अच्छा पति दे दीजिए। सूर्य बोलेंगे ठीक है तथास्तु, तो आपको एक अच्छा पति मिल जाएगा। फिर वो लोग पूछेंगे सूर्यदेव आपको ये शक्तियां कहाँ से मिली? तो सूर्यदेव बोलेंगे मुझे ये भगवान से मिली, भगवान श्री कृष्ण से मिली। बोले अच्छा, तो मैं डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण को वर्शिप कर सकता हूँ क्या? बोले हाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वर्शिप करिए। तो वेदव्यास का ये ऑब्जेक्टिव था होने का, कि उनको पहुंचाने का, कि एटलीस्ट उनको सूर्यदेव तक ले आओ और सूर्यदेव से वो पूछेंगे आपको शक्ति कहाँ मिली, तो वो चले जाएंगे भगवान तक। तो नारद मुनि ने बोला भैया ये कलियुगा वासी हैं, वो सूर्यदेव से बोलेंगे मुझे अच्छा हस्बैंड दीजिए, उसका सूर्यदेव को ही भूल जाएंगे। हाँ बोलो, क्योंकि सूर्यदेव से पूछना है, वो सूर्यदेव को ही भूल जाएंगे। तो वो आगे तो चर्चा ही नहीं करेंगे कि कैसे हुआ, ये कहाँ से मिला। सो therefore write one scripture which is telling exclusively about the Lord, and then came was Shrimad Bhagavatam. So that's how Shrimad Bhagavatam came. Okay. I hope I could answer in some way. Yes, thank you, Prabhuji. It gave a lot of clarity. Thank you. Okay. Yes, Mantru. Puji, it's something else, Puji. Like I can see, Puji, your notes is something printed document. You have written something on that, and you have make notes of it. So, Puji, can you share that original printed document, the original document which you printed, then make notes, that which has You all. need just the commentaries. Puji, best is like I can have translation to see all of them. Just to no, is it like you have to change something like that, or is No, like no, nothing. It's a Veda base where we have all the commentaries of acharyas. So I okay. just took a printout of it for my study, because you cannot carry your laptop everywhere. So I kept my notes, and on that I'm making notes. Means who is telling what, so that it can be in one place. Because Okay. commentaries are also very, very long sometimes, and sometimes very technical also. So that much is not required. So then I just make the main points. So if you want just the commentary, I can share that also. And if you want my notes, I can share that also. Okay, Puji. Okay. Okay, I will share then. Okay. Okay, I think lots of hands are up. Yes, so quickly I will answer now. Yes, Amantru. Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. You mentioned that word bhuya, that is again, and Krishna is not losing his hope for this, giving the knowledge again. But in practical life, like there is limit for anyone to explain the same thing. So how much time I should explain? Yes, देखो हम लोग नारद मुनि की तरह तो है नहीं। नारद मुनि कैलाश के पास कितनी बार गए? How much time? So he is like pure devotee. He is getting bhuya, bhuya, bhuya. कैलाश चलो, कैलाश चलो, अभी नहीं, अभी नहीं, कैलाश चलो, नहीं। फिर वो सांप की बॉडी में बन जाता है, अभी नहीं, कुत्ता नहीं, अभी नहीं। So yes, pure devotees, they have this quality of Lord, that they are again and again trying to take the living entities back to God. So for our case, we can try as we are Madhyam Adhikaris. Madhyam Adhikaris means they will have only 2 times OTP. One time program we had, 2 times we had in college. After that, we go for device. And after device, those who are starting coming, device 1, 2, 3, 4 people start leaving. So we don't do their follow-up. कि भूया भूया फिर से कराऊंगा। नहीं, इतनी एनर्जी नहीं होती हमारे पास कि हम फिर से सेशंस कराएं। तो जो भी anyone who is willing to accept, we go for that. So Rahasham Guru says, those who are faithful, make them more faithful.
and those who are not faithful, don't try to make them faithful. मतलब जो ऑलरेडी कॉलेज में हैं आपके अच्छे, उनको लेके चलो, किसी को प्रेशर मत करो कि आप आओ। सो बेटर इज, हम हमारे स्टेज पे यही है कि हम जो हमको मिलता रहे, जो फेथफुल, उनके साथ हम चलते रहे, है ना। Okay. हरे थैंक यू अमन ब्रो। यस कमल ब्रो। जी, इसमें जैसे सेकंड वर्स में आ रहा था कि उसमें प्रभुपा जी लिखते हैं कि इवन डेमीगॉड्स कैन नॉट नो सुप्रीम लॉर्ड। जैसे करेक्ट। हम देखते हैं ब्रह्म संहिता, लॉर्ड ब्रह्मा ग्लोरीफाई करते हैं, या फिर लॉर्ड इंद्रा वो उसके बाद जब वो वज्रपात करते हैं, तो मतलब उसमें ऐसा ग्लोरिफिकेशन आता है, मतलब वो ऐसा लगता है कि भगवान को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे किस सेंस में बात करते हैं? नहीं, वो नहीं जानते। अब देखो, इंद्र ने गोवर्धन लीला किया, उस समय नहीं जाना कि ये भगवान है, उसके बाद समझ में आया। उसके बाद जब पारिजात फ्लावर लेने के लिए आए कृष्णा, तब भी अटैक कर दिया। तो ही इज बिविल्डर्ड है। वो बोल रहे कि यार ये अर्थ का किंग यहाँ आके पारिजात फ्लावर लेके जा रहा है, अटैक। और फिर जब हरा देते हैं कृष्णा, सॉरी सॉरी मैं भूल गया था, मैं बिविल्डर हो गया था, आप ही सुप्रीम लॉर्ड हैं। और ब्रह्मा जी भी स्टार्टिंग में बिविल्डर हो गए, ये छोटा बच्चा ये कैसे कर सकता है, भगवान की सारी जानकारी हमें रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड देन ही डज ब्रह्म में लीला। फिर द्वारिका में फिर से होता है बिविल्डर। द्वारिका में आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, बोलते हैं मुझे कृष्णा से मिलता है। तो कृष्णा बोलते हैं कौन आया है, कौन आया नहीं पता, मैं हूँ ब्रह्मा हूँ, मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ। फिर वो अंदर जाते हैं, पता है ये पास टाइम आपको, द्वारिका में जाते हैं वो। फिर यस ओके, नहीं प्रभु। पता आपको पास टाइम। ओके, डिवोटीज को नहीं पता। तो एक बार ब्रह्मा जी द्वारिका आते हैं विजिट करने के लिए कृष्णा को। तो गेट पे गार्ड्स उनको रोक लेते हैं। तो गार्ड्स बोलते हैं रुकिए, हमें को पूछ के आना पड़ेगा। बोले हैं तुम्हें पता नहीं मैं ब्रह्मा हूँ, क्या पूछ के आओ कि मैं ब्रह्मा आया हूँ। तो फिर वो जाते हैं, पूछते हैं ब्रह्मा आया है। तो वो आते, वो सोल्जर्स आते हैं, बोलते हैं कृष्णा पूछ रहे हैं कौन सा ब्रह्मा है। कौन सा ब्रह्मा, पता नहीं है क्या, एक ही ब्रह्मा है, मैं हूँ चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो थोड़ा प्राउड हो जाते हैं, बिल्डर हो जाते हैं वो कृष्णा की पोजीशन से। तो फिर बोलते हैं ठीक है आइए। तो जैसे वो पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं वहां करोड़ों ब्रह्मा रहते हैं, कोई 10 सर, कोई 50 सर, कोई 100 सर, कोई 1000 सर। वो ब्रह्मा बोलते हैं बाप रे भाई कौन है। कृष्णा बोलते हैं इन सारे ब्रह्मा को मैंने बुलाया तुम्हारी पोजीशन, अपनी पोजीशन बताने के लिए। तुम इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा हो, मैं अनंत कोटि नायक हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको। तो ब्रह्मा जी बोले हाँ यस यस यस, समझ में आ गया। यार डेमिगॉड्स गेट bewildered, डेमिगॉड्स गेट bewildered by Krishna's seeing his जैसे जब डेमिगॉड्स वर्शिप करके जाते हैं कृष्णा को, तो पूरे पैराफिनिया से वर्शिप करते हैं। उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, तो सब कावर्ड बॉय आते हैं और फिर वो भी मजाक करते हैं, "ए कृष्णा हम भी तुम्हारी वर्शिप करेंगे।" और सब डेमिगॉड्स ऐसे हो रहे भैया क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है। ये कृष्णा को हम लोग वर्शिप करते हैं 56 भोग से, ये क्या चल रहा है। और ब्रह्मा जी भी बिल्डर हो जाते हैं ना, क्या ये सुप्रीम लॉर्ड है, जूठा खा रहे हैं अपने भक्तों का, क्या चल रहा है ये, समझ में नहीं आ रहा हमको। So therefore demigods they get bewildered by Krishna's activity. Yes, thank you. Yes, Advait Nitai bro. थैंक यू प्रजी। प्रजी यहाँ पे आप बता रहे थे कि कॉजलेस मर्सी के बारे में। तो प्रजी इसमें कॉजलेस मर्सी के बारे में जो हम लोग ये समझते हैं कि ये तो भगवान किसी पे कर सकते हैं, है ना। लेकिन कभी मैंने सुना कि प्रभुपाद जी करते हैं कि अगर हम भक्ति में लगे रहें, भगवान और भक्तों की सेवा करते रहे, गुरु की सेवा करते रहे, तो यार पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मिल सकता है कॉजलेस मर्सी। तो प्रजी थोड़ा आप और बताएंगे कि क्या ही मतलब कैसे समझा कि कॉजलेस मर्सी मिलेगा नहीं मिलेगा। और देखो थोड़ा causeless mercy का टाइटल ही है causeless। हम्म तो कृष्णा कृष्णा बाध्य नहीं है हमको मर्सी देने के लिए, भले ही आप पूरी लाइफ 16 माला 4 नियम फॉलो कर लो, कृष्णा बाध्य नहीं है आपको कृपा देने के लिए। तो हमारे लिए जो होप है वो है वैष्णव है, क्योंकि वैष्णव बहुत डियर है कृष्णा के। किंतु प्रभूया प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। Because he is very dear to Krishna, when he says that this devotee is very nice, then Krishna says, okay, I will give him mercy on your behalf. That's the only way. By our austerity, penance, study of scriptures, it's not possible. सो अगर हमने अपने पूरे एक्टिविटीज से, अपने भक्ति जीवन से किसी वैष्णव के हृदय में कोई जगह बना ली है, वही हमको थोड़ा सा हेल्प करेगा कि कृष्णा की मर्सी को अट्रैक्ट करने के लिए।
कृष्णा से तुम्हारा কৃষ্ণা দিতে পারো তোমারা শক্তি আছে আমি তো कंगाला कृष्ण कृष्ण बोले ধাই তাবা পাছে পাছে ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा कोयो तो दैट इज द मर्सी दैट इज द कॉजलेस मर्सी सो आप जब पढ़ेंगे माधुरी कादम्बरी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तो उसमें वो सबसे वाला पॉइंट यही लिखते हैं यही वाला पॉइंट कि भक्ति हमारी लाइफ में आती कैसे है वो पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि भक्ति हमारे जीवन में आती कैसे है तो वो एक ही चीज लिखते हैं कि किसी प्योर भक्त के हृदय में जो भक्ति है वही कृष्णा की भक्ति को अट्रैक्ट करके हमारे हार्ट में भक्ति को ग्रो करती है सो भक्ति संजायते भक्ति उनके प्योर डिवोटी के हार्ट की भक्ति से हमारे हार्ट में भक्ति जनरेट हो रही है तो बोले वो प्योर डिवोटी कब ऐसा सोचेगा बोले वो भी कॉजलेस है प्योर डिवोटी ने कब सोचा भैया हमारे इनको कृपा कर दो हो गई कृपा उसको प्रसाद दे दिया उसको कीर्तन दे दिया उसको किताब दे दी हो गई कृपा तो वो प्योर डिवोटीज कब कृपा करे कैसे कृपा करे सो दैट इज व्हाट इज कॉजलेस मर्सी ग्रेट Yes, sir. Thank you. ओके थैंक यू सो मच यस कार्तिक प्रो प्रभु जी लास्ट एक, क्वेश्चन विल एक यस यस कार्तिक प्रो ने हाँ रेज हैंड किया कहाँ गया चैट बॉक्स यस यस चैट बॉक्स में दिया आपको। अच्छा चैट बॉक्स में दिया आपने A devotee should not think on his own that will make me advance in Swami. But if someone adopts this thinking, so he may become like taking initiatives. But I've heard we should take initiative in spiritual life. Please clarify. Yeah, we should take initiative when under the direction. So what do you mean by taking initiative? जैसे प्रपात को बोला कि print books. उनके spiritual master ने बोला print books. Now what all initiative he took to fulfill that order? बीबीटी खड़ा कर दिया कितने लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया वो बोला था क्या इंस्ट्रक्शन में था क्या वो कि आपको अमेरिका में जाके ऐसा बीबीटी खड़ा करना है ऐसे प्रीच दिस मैसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज ये बोला था क्या न्यूयॉर्क जाना है वहां पर एक स्कॉन खोलना ऐसे रहेगा ऐसा होगा नहीं सो प्रॉपर टुक ऑल इनिशिएटिव टू फुलफिल द डिजायर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर सो वी हैव राइट को सपोर्ट करते हैं राइटली थॉटफुल सो इंडिपेंडेंट मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग एनीवन इट्स लाइक हम जो करना चाहें इंडिपेंडेंट थॉटफुल मतलब एक चीज हमको दे दी गई है अब मैं उसको कैसे अच्छा कर सकता हाउ कैन आई मेक इट लाइक फुल इन बिग वे फॉर कृष्णा दैट इज अलाउड दैट यू डू अनलिमिटेड जितना आपको करना थैंक यू yeah okay so I think we can हरे end कृष्ण over प्रभु here जी yes Pawan प्रभु जी एक आप वो बीच में बोल रहे थे कि कैसे भगवान कोई जान नहीं सकता है ऐसे जैसे अगर अब मन की गति से चले तब भी नहीं जान सकते तो ये पॉइंट कई बार सुना है कभी समझ नहीं आया प्रभु जी जैसे कि मन की गति से तो हम तो सुनते हैं मन कोई कभी भी कहीं पहुंच सकता है अभी हमने जितना डिस्कशन सुना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का तो ऐसे हमने जो पिक्चर्स देखी हैं प्रोपात बुक्स में हम तो मन की गति से सीधे वहां पहुंच ही गए तुरंत ही हमने प्रोपात ने बोला कि ये विंडोज है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हमने correct वो हमारे मन में पिक्चर आई तो हम तो मन की गति से एक तरीके से वहीं पहुंच गए correct इसका क्या मतलब कि मुनि मन की गति से नहीं पहुंच सकते उनको भी जानकारी तो रहती है correct तो मन correct की तो गति से कैसे पहुंच नहीं पाए वो जो श्लोक है वो योगीज के लिए है when you try on your own to search out Krishna then you cannot reach Krishna लेकिन आपने किसका शेल्टर ले लिया प्रपात का शेल्टर ले लिया सो प्रपात ने तुरंत आपको बता दिया जैसे यदुरानी माता जी हैं वो पेंटिंग कर दी सो वो आई प्रपात के पास बोली कि प्रपात ये परमात्मा हार्ट में खड़े हैं या बैठे हैं या सोए हैं कैसे हैं मतलब कैसे हैं मुझे परमात्मा पेंट करना है हार्ट में तो कैसे हैं सो प्रपात ने बोला it will take millions and millions of birth to know how Paramatma is there in the heart. ये तो गाना माचा जी तुम शॉक्ड हो गई बोले how I will draw then Prabhupada told don't worry I will tell you Paramatma is standing in the heart so that is how so यदुरानी माता जी अगर खुद से ट्राई करने जाए कि परमात्मा कैसा है तो कितना समय लगेगा पवन को
मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स अभी आप बताए। और वो भी पहुंचेंगी पता नहीं। लेकिन वो प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद कैसे है परमात्मा, तो कितना टाइम लगा उनको? बस कुछ क्षण। क्वेश्चन, दैट इज कॉस्टलेस मर्सी। प्रभुपाद ने तुरंत बता दिया, परमात्मा इज स्टैंडिंग इन द हार्ट। सो होल एंडेवर छोटा सा हो गया। दैट इज व्हाट इज कॉस्टलेस मर्सी। दैट्स व्हाट कृष्णा इज टेलिंग, यू कैन नो मी थ्रू माय डिवोटीज। प्रभु जी थैंक यू सो मच। प्रभु जी अगर टाइम, दो क्वेश्चन और थे प्रभु जी। आप बोले बहुत, मेरे को बहुत बार सुना, लेकिन थोड़ा सा पचते नहीं है यस, एग्जाम्पल। जो क्विकली आपने दो क्विकली, एग्जाम्पल यस। अभी दी ना, इन इंद्रदेव का और ब्रह्मा जी का, कैसे वो एक बार बिल्डर होने के बाद दोबारा बिल्डर हो गए। प्रभु जी हम तो ऐसा सुनते हैं कि कैसे टाइम स्पेन में देखें तो भगवान ने ये दोनों लीलाओं में कोई बहुत ज्यादा टाइम स्पेन तो रहा नहीं होगा। यहाँ करोड़ों साल निकल गए भगवान ने जब गोवर्धन उठाया था और जब द्वारिका में हुआ है। अब वो तो ब्रह्मा जी के सब कुछ एक ही दिन में हो गया। अभी एक ही दिन में एक बार क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी को सबक मिला थोड़ी देर पहले ही कि वो भगवान है। और क्या तुरंत इतनी जल्दी भूल जाएंगे? इतनी जल्दी पूरी हम नहीं भूलेंगे कि वो भगवान अभी भी सबक मिला है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था उनके लिए, तो वो एक घंटे भी नहीं रहेंगे, एक या फिर शायद कुछ मिनट भी नहीं रहेंगे। और थोड़ी देर बाद ही वो लीला हो गई। तो ये समझ नहीं आता ये कैसे है कि अभी अभी जस्ट उठाया था, अभी भी उनको डांट पड़ी और अभी बस एक घंटे भी नहीं हुए और फिर से वो भूल गए। ऐसे और ही वो इंद्रदेव का भी। ये बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंड। एक लाइन आपको क्लियर करें, मम माया दुरतया। कृष्ण बोल रहे हैं मेरी माया क्या है? दुरतया। अरे आप एक वॉइस डिवोटीज को देख लो, वॉइस डिवोटी वॉइस से निकलते ही कभी कभी माया में पड़ जाता है। आप देखो, वॉइस वॉइस में सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम किया, उस अच्छा से लेक्चर सुना उसने, ठीक है, कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, या चैंटिंग, मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो। फिर वॉइस से निकलते ही वो कुछ बिलबोर्ड देख लेता है, कुछ मूवी का देख लेता है, तुरंत जितना सुना है सब चला जाता है। मोबाइल में कुछ देख लेता है। आप देखो मोबाइल में आपके कुछ गलत लोग नहीं देख लेते हैं? मोबाइल अपना आपका वॉइस में डिवोटीज होते हैं, वो सुबह क्लास हुई और आफ्टरनून में वो मोबाइल में इंटरनेट में सर्फिंग कर रहा है, अचानक वो कुछ गलत देखने लग जाता है, कुछ मूवीज देख लेता है, कुछ वीडियो गेम देखने लग जाता है। और ये सुबह सुना है, ये सब माया है। और तुरंत वो मोबाइल में देखा, ओ सॉरी सॉरी गुरुजी गलती हो गई, गुरुजी मैंने गलती से मोबाइल में ये सब देख लिया। होता है कि नहीं होता है? रोज वही क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आता। ये सब चीजें हम देख हाँ, नए रहते हैं, ज्यादा होती हैं, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं हम ही लोग, जो कि हम इतने बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम इन सब चीजों को काफी हद तक ना कर पाते हैं, जबकि हम लोग उतने अच्छे साधक नहीं है। प्रभुपाद जी के इतना भक्ति दी है कि हमारे जैसे लोग जो कि इतनी मेमोरी नहीं, वो भी इतना मना कर पाते हैं। तो वो करेक्ट। ब्रह्मा जी तो प्योर डिवोटी हैं, उनको न जाने कितना नॉलेज है, और वो तो प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थनाएं करें तो हम देखते हैं कैसे कई बार हम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जाते हैं जहाँ बहुत वैसा है, फिर भी हमको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, हमको भगवान की याद आती है जब हम जाते हैं तो। अगर हम भगवान की से प्रीचिंग के लिए जाते हैं किसी चीज की, जो कि हमारे इस लोगों की क्या ही पोजीशन है, वो तो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने भी इतनी बड़ी प्रार्थनाएं अर्पण की हैं कि जो आज भी हम रिसाइड करते हैं। तो वो कैसे इतनी जल्दी तुरंत बिल्डर हो गए, अभी भी उन्होंने सी, प्रार्थनाएं दी। एक तो देखो, ये हर पास टाइम के दो पहलू होते हैं। एक हमारे सिखाने के लिए होता कि ये इतने सारे जो लोग हैं ये बिल्डर हो रहे हैं किस लिए? जिससे हमें भी शिक्षा दे सके कि भैया आप भी सतर्क रहिए, आप भी बिल्डर हो जाएंगे। जब हम जैसे लोग हो सकते हैं तो आपका तो कहना ही क्या। So this is one is for our instruction also. They are great souls, no doubt. But the principle which they are teaching is correct. That the Maya is so powerful that even they can be builded in even in short time. So therefore, we should take the principle. We should not disrespect them because they are great souls. But the thing which they are teaching us is that even if we are bewildered, then you can also be bewildered. You should be very, very alert. Second चीज, हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम इतने bewildered नहीं हो रहे हैं, हम लग रहा है यार हम इतने तो नहीं हो रहे। So that is because of the protective covering of association of devotees. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, उस बाढ़ को, उस भक्तिलता बीज को कौन प्रोटेक्शन होता है? फेंस होता है डिवोटीज। आप एक दिन के लिए एसोसिएशन से बाहर जाओ, जैसे हम कभी कभी घर जाते हैं, देखो कैसे भक्ति डाउन। एक्सपीरियंस है या नहीं पवन को? एक दिन यस। के लिए हम एसोसिएशन से बाहर जाते हैं, घर जाते हैं, तो हमारी भक्ति डाउन हो जाती तो जी है एक्सपीरियंस। है। तो क्यों? क्योंकि अभी हम एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में, इसलिए हमको लगता है यार मैं तो इतना बिल्डर नहीं हो रहा हूँ, ये ब्रह्मा जी तो इतने बिल्डर हो जा रहे हैं, इंद्र इतने हो जा रहे हैं। भैया वो आपकी शक्ति नहीं है, वो एसोसिएशन की शक्ति है, वो कृष्ण की शक्ति है जो हमको प्रोटेक्ट वही मैं कह करेगी। रहा था मुझे, मतलब हम लोग को जब इतना मिल जाता है, वो तो ब्रह्मा जी उनके पास तो पूरा एनवायरनमेंट ही उनके हाँ, तो वही आसपास तो, सब। इसलिए दो चीज बताई ना। दैट इज फॉर, वन इज फॉर टीचिंग अस एंड सेकंड इज फॉर फीलिंग अस ग्रेटिट्यूड दैट मेरे पास अभी प्रोटेक्टिव लेयर है। सच में आपको एक चीज है, हमको सिखाने के लिए किया उन्होंने ये पूरा पास टाइम। और दूसरा है कि हमारे ऊपर प्रोडक्टिव लेयर है उन्हीं आचार्य से, ब्रह्मा जी से ही हमारा चालू होता है परंपरा।
तो उन्हीं आचार्य की प्रोटेक्शन है हमारे ऊपर। ब्रह्मा जी बोले मैं बिल्डर हुआ था, तू मत होना, इसलिए मैं लिख दिया, मैंने अपना पास टाइम लिख दिया है, जिससे कि तुम लोग बिल्डर ना हो जैसे मैं बिल्डर हूँ। सो दिस इज द मर्सी ऑफ आचार्य कि वो अपना पास टाइम लिख दे रहे हैं हमारे लिए। करेक्ट ना? एक क्वेश्चन और था पूछिए अगर आपके पास टाइम हो ना, फिर बाद में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में करते हैं, काफी टाइम हो गया, डिवोटीज भी ठीक, वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पूछिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।